Morning students, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयर बुक 2026? सिप्री इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पब्लिश करता है हर साल रिपोर्ट ऑन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड वाइड, और अकॉर्डिंग टू सिप्री 2026 इंडिया हैज द सिक्स्थ लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास इंडिया की क्या रैंक रही है? न्यूक्लियर arsenal in the world. India has sixth largest nuclear arsenal in the world. और जो कंट्रीज इंडिया से आगे हैं वो है रशिया, यूएसए, देन फ्रांस, यूके एंड इंडिया। और इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान। इंडिया सिक्स रैंक, इंडिया से आगे रशिया, यूएसए, चाइना, रशिया, यूएसए, चाइना एंड देन फ्रांस, यूके, देन इंडिया एंड फिर पाकिस्तान। इंडिया की रही है सिक्स। India has sixth largest nuclear arsenal in the world. Second question, who became the first Indian player to win the Norway Chess 2026 title? One first Indian player and defeat the Norway Chess 2026 title are Pragnanda. R. Pragnanda created history by becoming the first Indian to win the Norway Chess 2026 title of Norway Chess tournament. He is from Tamil Nadu. Tamil Nadu से हैं, and he became grandmaster at a very young age. R. Pragnanda. It's the consumed pressure of Indian Navy received which gallantry what the शौर्य चक्र मिला है। शौर्य चक्र को अवार्ड दिया जाता है मेनली फॉर ब्रेवरी शोन ड्यूरिंग पीस टाइम। ब्रेवरी शोन ड्यूरिंग पीस टाइम। शौर्य चक्र so middle lieutenant commander Suraj Parashar, lieutenant commander Suraj Parashar received this award for exceptional courage. शौर्य चक्र इनको मिला है। Question, in the richest person in Asia as per the Forbes real-time billionaires list, कौन बने हैं? Pratham Adani. Pratham Adani, chairman of Adani Group, he became the richest person in Asia as per the Forbes real-time billionaires list. Pratham Adani. Next question, India's first hospice activity watch kernel. Real system managed life practices being launched by which state? कौन सी स्टेट ने लगा है? केरला, केरला फॉरेस्ट केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है और डिजिटल सिस्टम ट्रैक एंड मैनेज वाइल्ड केसेस वाइल्ड क्राइम केसेस को ट्रैक और मैनेज करने के लिए लॉन्च किया गया है डिजिटल सिस्टम जिसको बोला गया है हॉक यानी हॉस्टाइल स्पाइस एक्टिविटी वॉच कर्नल। डिजिटल सिस्टम जो मैनेज करेगा वाइल्ड क्राइम केसेस। कौन सी स्टेट लॉन्च किया? केरला, केरला में केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। the fourth Asian athlete 90-meter marking champion Rumesh Tharanga Pathir. Rumesh Tharanga Pathir is Sri Lanka से, he is from Sri Lanka and saying 90-meter is considered as a world class achievement in javelin. Is
Race Taranga athlete. He has become the fourth Asian athlete to reach the 90-meter mark in javelin. Race Taranga athlete. Next 7, who has been sworn as 48th Chief Justice of Patna High Court. Patna High बिहार में है और कौन 48 Chief Justice सामने है Justice Meenakshi Madhurai. Justice Meenakshi Madhurai has become the 48th Chief Justice of Patna High Court, and High Court judges are sworn in by the Governor of the state. Governor of the state के सामने ये sworn करते हैं Governor of the state. So कौन बने Justice Meenakshi Madhurai. Next question: in which city will be the second CPA India Region Zone second conference be held? कौन सी सिटी में सेकेंड सीपीए इंडिया रीजन सेकेंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाएगी? सीपीए मतलब कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन. और ये कौन सी सिटी में कौन सी जाएगी? चंडीगढ़. चंडीगढ़ प्रमोट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मेनली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रमोट करती है और इंकरेज करती है कॉपरेशन कॉमनवेल्थ. कौन सी जगह है? कौन सी सिटी में सेकेंड सीपीए इंडिया रीजन सेकेंड कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़. Next, in which Indian state was the issue recently documented? कौन सी इंडियन स्टेट में बहुत मशहूर recently document किया गया है? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश is the biodiversity hotspot और इसके काफी यहाँ पर fish forests पाए जाते हैं और rare species and land of rising बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश. Land of rising sun. Land of rising sun ये अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है और येलो ऑफ वर्ल्ड ये रिसेंटली कमेंट किया गया अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं और रेयर स्पीशीज भी अरुणाचल प्रदेश. Next question 10, who has been appointed as the next vice chief of the air staff of Indian Air Force? तो कौन अपॉइंट किया गया as the next vice chief of the air staff of the Indian Air Force? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित. एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अपॉइंट किया गया है. सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं इंडियन एयर फोर्स के ये और ये असिस्ट करते हैं चीफ ऑफ एयर फोर्स के लिए असिस्ट करते हैं. सो कौन अपॉइंट किया? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित. तो ये 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.